I could. No. But see, these are the questions Yeah, that I you could do have. this. Yeah, You could do yeah, I this. did. Okay. Actually, this is there in the last class only, no? Yes, sir. The number of molecular orbital formed is equal to number of atomic orbitals combined. So here we are combining 2s and 2p. So we'll get 2 molecular orbitals also, right? Okay. Let us see another one. What about the other questions? Which of NH3 and NF3 has a higher dipole moment and why? I wrote it like N is more electronegative and there is no cancellation, and F is more electronegative and there is cancellation in NF3. So NH3 is But more. you remember we have discussed this. I mean the Yeah, exact question. yeah, same है ना? thing. तो Yeah, we have done. मतलब ये तो आना चाहिए ना फिर तो सही सही बिल्कुल exactly you should know how to answer it, right? Yeah, I wrote that. अच्छा. So what about then why NF3 is pyramidal and while BF3 is trigonal planar? Yeah, that answer I kind of wrote the answer, but like I don't know how to explain it like in words. Okay, so basically you should have, I mean, the correct answer it would be that NF3 is pyramidal while BF3 is trigonal planar, right? So NF3 is pyramidal because the electronic geometry, first of all, the steric number, you will start with steric number, okay? So steric number is equal to 4 in this case. Steric number is equal to 3 in this case. Why 4? Because it also has a lone pair electron. Hydrogen has a lone pair. So the hybridization here, it will be sp3, and here the hybridization is sp2. If the hybridization is sp3, the electronic geometry is tetrahedral. And here the electronic geometry is trigonal planar. And if the electronic geometry is tetrahedral and we have one lone pair, so we'll write that the shape is pyramidal. Okay, due to lone pair. Here you don't have any lone pair, that is why it is trigonal planar. So main difference of point is what the steric number here. The steric number is 4, and here it is 3. Now in your school they must not have taught about steric number. So what you would answer is that this has a hybridization of sp3 and this has a hybridization of sp2. That is why there is a difference. Okay. Yes, Fine. sir. What about distinguish between sigma and pi? Obviously, it is a very basic question that people ask. Should know how to answer it, right? Yes, sir. Okay, and The seventh sorry, question also. Mixing up last on one. this. No, the second last one. Second, discuss the concept of hybridization. Yeah. So, okay. So, what problem you had in this question? The Like second part. yeah. Okay, so we have done. If carbon has a double bond, then it will be what, right? We have done this now in hybridization. Let's see here. Okay. So if there is no double bond or triple bond, then it is sp3. If there is one No. double bond, The first part. The first part. oh, discuss the concept of hybridization. Yeah. You could not write this. I just wrote like mixing of atomic orbitals of one atom resulting in the formation of new orbitals. That's it. Okay, see. So what you should write actually is you should write at least try to write 2 points. Huh? So this is where is this? If you wrote this point, okay, this one, concept of hybridization, intermixing of atomic orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals which have equivalent energy, size, and shape. Okay, acha. So you understood the concept about mixing of atomic orbitals of one atom, that you remembered, I guess, right? Yes, sir. Okay, fine. So it will not get obviously complete marks, but you will get partial marks for sure. It's not wrong. Your answer is not wrong, but it is incomplete, I would say. Okay. And I would also say like how much marks is there? What are its different types in carbon atom? So that is sp2. You have sp3, sp2, and sp, right?
So I Yes, hope sir. you wrote this sp3 to nsp, and here you can easily identify, yes or no? Yeah, I could. Okay. So I will see, I think this is of 3 marks now. I think so. Yeah, I think it was of 3 only, I think, right? And I think we don't, I did not give you all of Yeah. these questions. I think all of these questions were not given. I gave you, what, how many questions did I give you, right? Okay, no, I gave you all the questions were there here. Okay, okay, fine. So I will see how to distribute the marks. For the last one, you were able to write the last one, no? Yes or no? No, sir. No, why? I don't know. Like I couldn't not understand the question. So you could not even understand the question or what? I could not understand the question, like how to do it. So you were present in the last class, yes or no? I was not, but I saw the video. You saw the video. So you saw the video and made notes and everything. So you have done all the things right. One Uh, is right. no, not this So one. I didn't watch this one. you have not watched this one. Okay, fine. Then you will be having problem today also. Why you did not watch this? So as we have combined 1s, it was the same thing for 2s. Just need to write 2s, nothing else. And here instead of 1s, it will be sigma star 2s and sigma 1s and 2s here. 2px were already done. So if you see 2p mixing, this is for x and y. Atomic orbitals combined above and below ion. Okay, here also we have taken Z to be the internuclear axis. Okay, fine. See, actually, I have even given you here 2pz, it is going to give you. And it's exactly consider the z-axis area the molecular orbital formed by LCU. I think this is the same question. No? Label the molecular. I mean, it's not completely same, but again, the same concept is here. So 2pz, it is going to give you sigma 2pz, and you just need to write these part, nothing else. Pi and pi. अगर आप आपने देखा ही नहीं है तो फिर मतलब क्या कर सकते हैं इसमें? Okay, fair. Siddhika, how was your test? Sir, I didn't do it. आपने दिया ही नहीं, एग्जाम ही नहीं दिया या फिर आपने सवाल नहीं दिया? आपने सवाल नहीं किया आपने? Which test, sir? Friday test, Siddhika. No, sir, I didn't do it. I had guessed Why? over. You had guessed over. तुमको भी साथ में बैठा Yes, लेते. sir. सिद्धिका, उनको भी साथ में बैठा लेते ना, वो भी टेस्ट देते थे. नहीं, लेकिन ऐसे मतलब ट्राई कीजिए कि इन रीजंस की वजह से टेस्ट ना छूटे. ओके, ठीक है सिद्धिका. जनरली आप Yes, सारी sir. चीजें कर लेती हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए जरा. ओके फाइन. सो वेयर आर द स्टूडेंट्स? वी डोंट हैव स्टूडेंट्स राइट नाउ. फिर अचानक से ये लोग लेट में आएंगे, फिर बाकी चीजें समझाते रहो उनको. Siddhika, you were present in the last lecture, yes or no? Yes, sir, I was present. You are present now, because I need at least one student who is able to understand. Because Sarah was not present in the last lecture, so Sarah won't be understanding much in this lecture. So, Sarah, you try, but if you don't know what is molecular orbital theory, it will be very difficult. You get my point, Sarah? Yes, sir. Okay. Okay. So I don't know whether we have written the conditions of combination of atomic orbitals. Formation of molecular orbital, yeah, done. Conditions we have not written, right? Uh, you think? Actually, start with conditions for combination of atomic orbitals. That's the first topic here. Conditions. So conditions for combination of
atomic orbitals. This is linear combination of atomic orbitals say conditions. Okay. Now, number one, combining atomic orbitals. So can you say the full form of LCAO? Linear combination of atomic orbitals. Combining atomic orbitals should have. तो आप सैटरडे को भी नहीं आए थे मतलब सारा, राइट? No, sir. क्यों? क्यों इतना एब्सेंट कर रहे हैं आप क्लासेस? हाँ सारा, I think I have something that सॉरी, I was out. लेकिन that's not the reason. Now, why were you out? Why were you out when you had class? That, tell me that. Your out is not the reason. You knew there was class, but still you were out. That is the question. Why? Hmm? I Okay, had so a sudden appointment. you had an appointment. A sudden appointment. A sudden appointment. So combining atomic orbitals should have same or slightly different energy. The difference in energy of atomic orbitals should not be very vast. That means if you're combining, let us suppose 2s, then it should be combining with 1s or 2s, something like you've got 2p, for example, or even 3d you can have, but you cannot have like 5s or something like that, or you cannot have 5d or something like that. So they should be combining. They should have similar energy, same energy, or slightly different energy, not very large difference in energy. Okay, next one is combining atomic orbitals. Should have same symmetry. Should have same symmetry. What is meaning of same symmetry? For example, if I am taking the p orbital, then I should also be taking here. For example, if it is plus minus, then I should be taking plus here. Okay. And similarly, I cannot be combining atoms like this. You have plus and minus, and I am combining with plus here. So it is going to get cancelled out. Okay. So we cannot combine in this order. They should have similar symmetry. They should have similar symmetry. Third point is that combining atomic orbitals should have maximum extent of overlapping. Okay, so they should overlap in a good amount. Okay, so in the last lecture, we have seen that when two atomic orbitals combine, they form molecular orbitals, and they form different types of molecular orbitals. Okay, so first of all, next, so when we get different molecular orbitals, and in those molecular orbitals, we are going to place electron. Okay, so Sarah, I will give you the basic idea of molecular orbital theory. In atoms, the electrons are in atomic orbital. Correct, Sarah? In atoms, Yes, electrons are in atomic orbitals. So in molecules, the electron will be in molecules, the electron will be in. फिर से try करते हैं. Okay, Sarah, keep your mic on. Sarah. Okay. In atoms, electron are in. अरे अभी तो बताया था. atomic orbital. Very good. So in an atom, electrons are where? In Atomic orbital. so atom में कौन से orbital में होंगे? Atomic orbital. Okay, Sarah. In atoms, Yes, the sir. electrons are in. So in molecules, it will be in molecules. Electron will Molecular orbital. आपने ही बोला. Make sense? Yes or no? Yes, sir. Okay, so that is the main concept of molecular orbital theory. There is no overlapping, hybridization, सब कुछ नहीं होता है.
they said that there is a simple concept in atoms, the electrons are in atomic orbital, in molecules, it will be in molecular orbital. Okay. If you remember, we had different atomic orbitals, 1s, 2s, 2p, 3, then you had 2s, 2p, 3s, then you have 3p, then you have 4s, 3d, 4p, right? So we arrange the different atomic orbitals in increasing order of their energy. Remember that, Sarah, Siddhika, both of you? Yes, sir. So here when we get molecular orbital, we have to arrange them in the increasing order of their energy. Yes or no? Siddhika, I'm not getting answers from you. Correct, Siddhika? We'll arrange them in Yes, sir. increasing order. Okay. So please write order of energy for molecular orbital. Okay. Now here we have two different cases. Okay. Number one is the case one, when the number of electron is greater than 14. Number of electron is greater than 14. So the case is a simple case. See, first of all, we will have the sigma 1s. What is the meaning? A sigma bond formed by the mixing of two 1s atomic orbital. 1s, 1s, they will mix, they will form a sigma bond. This will have the least energy. Followed by, as we form a bonding orbital, there will be an anti-bond. There will be also an anti-bonding. This is for Sarah. Siddhika, you know, there will be always an anti-bonding. And this anti-bonding is also formed by 1s. After that, we have 2s. So 2s will mix. They will form sigma 2s and then sigma star 2s. After 2s, what do we have? We have 2p. Now in 2p, we have three orbitals. So first we will mix sigma 2pz. Why we are mixing 2pz? Because z is the internuclear axis. And when the 2pz they combine, they will form a sigma bond. Sigma bond is more stable. Sigma bond is more strong. That is why less energy. And after that comes the pi bond made by 2px and 2py. So pi bond of 2px will have equal energy as that of pi bond of 2py. After this comes the pi star. Pi star 2px will be equal to pi star 2py. After pi star, it comes So that star the is case. anti-bonding. Yeah, star is anti-bond. After this comes the sigma star 2pz. Sigma star 2pz. You got this? Okay, I will also tell you a method to remember this. So obviously, next case is going to be second. That is case number 2. Oh, the red pen. Case 2. And there is obviously an explanation for all of these things, and why we have two different cases and all. थोड़ा सा hint आपको दिया हुआ भी है NCERT में. So in case 2, we have number of electron, which is what we will have, which have smaller than or equal to 14. Smaller than, less than or equal to 14. Okay, less than or equal to 14. सही बनाया ना हमने? Everything is fine. Now in case 2, please write, we have sigma 1s, this will be same. Sigma 1s star, this will be same. And you have sigma 2s followed by sigma star 2s. Now after this, we have not sigma 2pz, but rather we have pi 2px equal to pi 2py. Now after pi, we have sigma 2pz. After pi, we have sigma 2pz, and then we have the pi star.
2px equal to pi star 2py, and after that we have the same thing, sigma star 2pz. अब याद कैसे रखना? Please remember. What is greater than 14? You see, till here everything is same, yes or no? Can you see that? Till sigma star 2s, everything is same. Correct, Sara and Siddhika? Yes, sir. Okay. Now, what comes after 14? What comes 15. after 15? 15 is odd, right? Yeah. 15 is odd. Odd बोलने से क्या आपके दिमाग में आ रहा है? 1 या 2? 1. वेरी गुड. तो कर देना आपको 1 2 2 1. ठीक है, 1 2 2 1 याद रहेगा? बोलिए. Yes, sir. And what is a number of elements equal to 14? So 14 is what? 14 is even, Even. and from even you will remember 2, so you'll have 2 1 2 1. You'll have 2 1 2 1. Sir, the pi will always be in brackets. The pi 2px into 2y will be in brackets, huh? Because they have same energy. That is why for proper representation I have kept them in brackets. Okay, and also to remember that they will be together ना, 2 1 2 1 हमको इस तरह से याद है, तो इस वजह से हम और ये थोड़ा साफ साफ दिखता भी है ना. You can, if you don't write, then it is not a problem. Okay, I just write it for a purpose कि ये दोनों की एनर्जी सेम, बट ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू राइट इट, है ना. अगर आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स आपके कटेंगे. All of you got this? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Now let us start making different molecules. If you have written, please let me know. All of you done writing? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Assalamu alaikum, Mariam. How are you? Mariam, am I audible? Yes, sir. Okay. So what time was given to you for the lecture? Sir, actually, I didn't have the link. It was on my mom's mobile and she was out, so I was calling her, but she didn't pick up the phone. Can you see the links of this class and the previous class that we have? Do you do any other classes in Learnivio? Yeah, I physics and bio. And you do physics and bio. Can you see that are all the links same or are they different? Can you please check that? So they're different. They're different. Okay, for chemistry? Yeah, chemistry always it's the same, but this link, today's link was different. Today's link was different. Yeah. Okay, so do you have Learnivio's number Yeah, they send the link. right now? No, not right now. They sent, I don't know. Any, but I'm not asking about your mother's phone. I'm asking about you. Do you have Learnivio's number? Yeah, I have it. So why you did not message them to please send the link in this? I am Mariam. Yeah, I'll Email. text them. Yeah, I'll text them now. So you will text this from now on, okay? Yeah, I won't be late You next time. no, thank you. Achha, you were present in the last lecture? Yeah. You were present, right? You have revised it? Yeah. You identify these signs, sigma, sigma star, Yeah, bonding, anti-bonding, right? yeah. Okay, then please write it down, please. Okay, they have written Mariam, okay? So you please write it down, then I will explain it a bit. Okay.
Marie, you will let me know once you're done writing. Okay, sir. Yes, sir, I'm done. So just to tell you, this is similar to, if you remember atomic orbitals, we have 1s, 2s now. So in molecules, the electron will be in a molecular orbital. So this is the order of different molecular orbitals. Now we have two different cases here. So when we have number of electrons, it is greater than 14. It will be sigma 1s, sigma 1s, sigma 1 star, sigma 2s, sigma 2s star, sigma 2pz, pi 2px, pi 2py, pi star 2px, pi star 2py, which will be equal because both of them are pi bonds. And then we have sigma star 2pz. Now, when we have less than or equal to 40, there is a change. That means sigma 2pz takes the place of pi in pi 2px and pi 2py, and pi 2px and pi 2py takes the place of sigma 2pz. Now, how to remember this? There is a simple mnemonic that you can remember. If number of electron is greater than 40, that means 50. 15 is odd, so you will remember odd means 1, right? Odd you can remember 1 from odd, right? So you will do 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1. In the case of 4, if it is equal to 14, then you remember 14 is even. That is why it will be 2, 1, 2, 1. So you practice this a bit, and you will, once you make these case 1 and case 2 on your own, remembering 1, 2, 2, 1 and 2, 1, 2, 1, then it will be easy for you. Okay. So we will start first with hydrogen molecule, but before that, please write some remarks. Please write some remarks. So there are a few notation that I will be using. So we are going to put electrons, right? So can anyone tell me, let us suppose we have hydrogen. So hydrogen is going to have only 2 hydrogen molecules. That means 2 electrons. So obviously number of electrons is less than 40. Number of electrons is less than 40. So we are going to put electrons on the sigma 1, is the orbital with least energy. Each and every electron, it wants to occupy that orbital which is having least energy, the Aufbau principle. So according to that, we are going to put the electrons in the sigma 1s. All of you understand that? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. Now, this is a bonding molecular orbital. This is what? It's a bonding molecular orbital. If we have more than 2, then I will put it at the sigma star. This is anti-bonding. Okay. So there are 2 signs for the number of electrons in bonding and anti-bonding. When I write NB, this means number of electrons in Mariam and Siddiqa. You understand this? Yes or no? Please tell me. Number of electrons in bonding Yes, molecular sir. orbital. Yes, sir. Na is number of electrons in ABMO, that means anti-bonding molecular orbital. Okay. There is a term related to the molecular orbital theory, but we have already seen this earlier, bond order. So when we have 1 bond, it is 1. When we have 2 bonds, it is 2. But in the case of molecular orbital theory, it is given by half of number of bonding electrons minus number of anti-bonding electrons. Okay, Mb minus Na. All of you got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next we have, then we will talk about the first point, second point, third point, fourth point. Then we will talk about the existence of a molecule. First thing that we'll talk about is the existence of a molecule. See, if we have number of bonding and number of anti-bonding, both of them are equal, this value will be equal to 0 and bond order will be 0. When bond order is 0, so obviously there is no bond between the atoms. And if there is no bond between the atoms, so those are individual atoms, there is no molecule. You got the idea? So please tell me. Yes. Anji? Yes, sir. Okay. So you can see that there are 3 cases. The first case would be when the number of bonding is greater than number of anti-bonding. So obviously in that case, it exists because bonding is greater.
right? So this will be a positive value. Bond order will be a positive, and these greater than it exists. ऐसे लिख सकते हैं. Therefore, bond order is equal to positive, and molecule exists. Okay. So they can ask you questions like comment on the existence of the following molecules. So we'll treat them with MOT. Treat them का मतलब उसमें आप लोग electrons like you will do whatever we are going to do for H2 and many other elements. And then you will talk about the number of bonding and anti-bonding. Second case can be when number of bonding it is equal to number of anti-bonding. In that case, what is going to happen? Therefore, the bond order will be equal to 0 and molecule doesn't exist. Third is number of bonding is less than the number of anti-bonding. This is the worst case. In this case, therefore, bond order will be negative, and obviously, and molecule doesn't exist. Right? So if we have bond order negative, that means it is very unstable molecule. Right? It's a very unstable molecule. Write this down. Existence of a molecule. After this, we will talk about bond length. We can talk about bond length and what else? We can talk about the stability and other things also. Okay. So right next. Bond length. So if we have a higher bond order, if we have the higher bond order, then the atoms will be closer together, so bond length will be small. So it is inversely proportional to the bond order. Okay. Next, if we have bond length, we can have stability. Stability बाद में देख लेंगे. पहले bond dissociation energy देखे थे. Bond dissociation energy. It can be also known as bond energy. We have already seen this in valence bond theory also. So it will be also directly proportional to the bond order. So if I have higher bond order, atoms are closer together, so it will be difficult to separate them. That means we will be requiring larger amount of energy to separate them. And after that, you can write stability. And stability is also dependent on bond order, because if I have a higher bond order, the atoms are closer together, and they're closer together, then obviously there is more attraction. Higher the attraction, higher is the stability. Now, the last thing that we need to find is the third point, that is magnetic property. Magnetic property. There are two cases here. Number one, when you have all electrons in molecular orbital are paired, then it is going to be diamagnetic. Secondly, if you have when electron in molecular orbital are, or if you have even one electron that is unpaired, no? So if you will have an electron in molecular orbital is unpaired, even if one is unpaired, it will be paramagnetic. It will be paramagnetic. Got this, guys? This location. Yes, sir. Yes, sir. What about others? All of you know? Got this? Yes or no? Yes, Yes. sir. ठीक है, चलिए. तो अब बढ़े आगे. Can we move on? Yes. So what I will do, पहले हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले write the topic.
bonding in homo, क्या बोलते हैं इनको? homo dinuclear. Wait a second, I need to get the book. I forgot what to call them. Homo diatomic होता है शायद. Or is it something else? Just a second, give me a second. Homo nuclear diatomic, or it is homo diatomic. Both of them, both the words are fine, but I just need to confirm it. Nuclear diatomic or homo diatomic? Homonuclear diatomic. In homonuclear diatomic molecules. What is the meaning? Homo means same, nuclear means same atoms, same nucleus. Diatomic means we are only taking two atoms. Molecules means obviously they are going to form a bond. So the number one case is for H2. We are going to analyze the H2 molecule. So इसके बहुत सारे name है ना, बहुत सारे. What we are going to do, there are various names. So we are going to apply MOT on H2 molecule. We are going to treat H2 molecule with MOT. Okay? We are going to treat H2 molecule with MOT, and we are going to explain the formation of hydrogen molecule according to MOT. If you have these wordings in the question, then you are going to do what I am going to do, right? Is this clear? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. First of all, see, there are hydrogen will take a bit more steps because I have to explain each and every point. But when I go to helium, we will be very much fluent with it. Okay. So in H2 molecule, you first of all tell me number of atoms here. We have what? How many atoms? Number of atoms. 2. Number of atoms equal to 2. Okay. Number of electron in each atom. So if I have one atom, then it is going to have one hydrogen atom is going to have one electron, correct? Yes, sir. So total number of electrons? 2. 2. How much? Is equal to 2. So case 1 or case 2? अच्छा फाइन, डोंट वरी, ठीक है, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया. केस 1 केस 2 बोल दिया हम. केस 1 केस 2 था ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा 14 से ज्यादा, 14 से कम. केस 1 और केस 2 वंस अगेन. Case 1. Case 1, number of electron is greater than 14. Oh, sorry, case 2. Case 2, Case right? 2. Case 2, okay. Now in case 2, what is the, so now we are going to write the electronic configuration, right? And what is this? Not the atomic electronic configuration, right? Rather it is the molecular electronic configuration. तो जिस तरह से बिल्कुल हम लोग किसमें करते हैं, atomic orbitals में. So here also, what is the first orbital that we have in case 2? First orbital? Sigma 1s. Sigma 1s. Okay, sigma 1s. Now each orbital can have how many electrons? आप atomic orbital के ही बारे में बताइए. Each orbital can have how many electrons? 2. 2 electrons. So sigma 1s will have how many electrons? We have 2. So you will also give them 2 electrons like this. Got it? Sigma 1s 2. Got this? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Anyone? Anyone? Any doubt? Please let me know. Sigma 1s2. No doubt, right? Okay. No, so you will sir. see some people in the NCERT, rather you will see it will be shown like this: sigma 1s 2. Okay. So if this looks much more clean, then you can try this also. Okay. No worries in that. So if you are going to write in a cleaner way, no one is going to cut marks. Okay. So you have to just communicate what you are trying to say.
don't worry too much about the language that we are using, है ना, mainly in the symbols, है, sigma होना चाहिए, 1s होना चाहिए, square होना चाहिए, उसके अलावा बाकी beautification के लिए, for cleanliness, if you are doing something, that's fine. So molecular vital, so we don't have any more electrons left, so we don't need to do anything. Now the first thing that we have to do is the number of bonding electrons. Nb is equal to how much? Nb is equal to so both of these electrons, both the two electrons, they are in bonding or anti-bonding? Both of these are in anti-bonding or bonding? अरे जल्दी बोले ना भाई. Bonding. Bonding ना. What happened? Mariam, Siddika, keep your mic on, all of you guys. Keep your mic on. Mariam, Siddika, Sarah. Mariam, you are understanding this? Yes or no? Siddika, turn your mic on. How do we know if it's bonding? भूल गया. स्टार रहता तो एंटी बॉन्डिंग, स्टार नहीं रहता तो बॉन्डिंग. Yeah. It is bonding na. So number of bonding is equal to 2 and number of anti bonding, it is equal to how much? Do we have any anti bonding orbitals here? No. No, so 0. 0. Correct? Yes. So now bond order is equal to, please keep your mic on, all of you guys. Bond order is equal to, tell me what is the formula for bond order? 1/2 NB minus NB. 1/2 into NB minus NB minus NA. So please say, tell me what this value will be. 1/2 into what is NB? 1. 1 है. सारा आंसर बता रहे हैं, सीधा आंसर बता रहे हैं, आराम आराम. 2 minus 0, which will be equal to 2, and bond order will be equal to 1. Correct? Bond order is equal to 1. So bond order is positive, yes or no? Yes. Okay. So I think, tell me, existence, H2 will exist, yes or no? Yes, sir. Yes. H2 exists. H2 exists. Got this, yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. पूरा यहाँ पे एक कंपैरिजन के लिए आपको हम बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज वी हैव H2 पॉजिटिव. क्या बोला हमने? H2 पॉजिटिव. दैट मीन्स वी हैव रिमूव्ड 1 इलेक्ट्रॉन. करेक्ट है ना? फ्रॉम H2, how will we get positive? We have removed 1 electron. So if you are going to remove 1 electron, how many electrons will be remaining? We had total 2 electrons, right? Now how many electrons are remaining? 1 electron. So our configuration will be sigma 1s1. Correct? Yes, sir. Yes. That is, now the bond order will be equal to 0.5. Yeah. तो देख लीजिए आप लोग, सही है? सारा, सिद्दीका, बॉन्ड ऑर्डर 0.5. Yes, sir. है ना? ठीक है. Now you can compare the H2 molecule and H2 positive. तो कौन ज्यादा है? बताइए कौन ज्यादा स्टेबल? स्टेबिलिटी की बात करें अगर हम, सो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? H2 की ज्यादा. किससे? H2 पॉजिटिव से, है ना? क्योंकि जिसका ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसी का ज्यादा स्टेबिलिटी. If I talk about the bond length, then what you will say? Bond length किसकी ज्यादा? Which will have H2 will have, which will have, tell me, चलिए मरियम बताएं पहले. मरियम, which will have higher bond length, greater bond length, larger bond length? ज्यादा bond length किसका होगा? H2. अच्छा, कैसे बता रहे हैं? किसका, क्या चीज का रिलेशन है बॉन्ड लेंथ से? बताइए जरा. 1 by bond order. 1 by bond order, है ना? तो Yes. इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? Inversely. तो देखिए बॉन्ड लेंथ जो है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. सो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा. तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? Which has higher bond order, H2 और H2 positive? H2 positive. उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है. क्या है बॉन्ड ऑर्डर? बताइए जरा, किसका ज्यादा है? 0.5. 0.5. नहीं, हम वो पूछ ही नहीं रहे. किसका बॉन्ड, क्या हम पूछ रहे हैं? सवाल बताइए तो जरा. व्हाट डिड आई आस्क?
सुना ही नहीं ना Whose आपने? bond order is higher? Whose bond order is high? Whose का मतलब किन दोनों के बीच में कंपैरिजन है? Yeah, ठीक है, कंपैरिजन इज बिटवीन H2 and H2 plus. whose bond order is higher? H2. So its bond length will be That, bond length will be less or more? less. उल्टा बोल रहे थे ना पहले आप. Yeah. ठीक है, तो ध्यान स्टेप वाइज करेंगे, then it will be fine. So H2 will have lesser bond order, H2 plus will have higher bond order. Sorry, H2 will have lesser bond length, H2 positive will have larger bond length. And I think stability and bond energy, they will have the same order. Yes or no? Please tell me. Yes. sir. No difficulty here, right? Yes or no? No, sir. No, है ना? sir. थोड़ा रिवाइज करते रहेंगे बस. ठीक है, it's new, it's not tough, it's just new. I hope you understand that. Yes or no? Yes. Please note this down if you have not noted. If you have noted, please let me know. Done. Done? Can I move on? Yes, sir. Please. Yes. Next one will be helium-2 molecule. The second one is He2 molecule. He2 molecule. Now, I will directly ask you now, total number of electron. बताएं जरा, total number of electron in He2. We have 2 helium atoms. Total number of electrons will be 2. how much? 2. Total. One helium atom has how many electrons? Oh, 3. 4. हाँ ठीक है. अच्छा, एक चीज हम लोग ने भूल गए ना, हम लोग भूल गए, आप याद दिलाते रहिएगा. ठीक है, सी वी हैव टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भूल गए ना H2 में हम लोग. सी हियर, सो H2 exists and magnetic property will be see in an orbital the electrons are always paired, so it will be diamagnetic, right? Correct? Yes, है sir. ना? ठीक है. और H2 plus की अगर हम बात करें, so it will be para. H2 plus क्या होगा? Para, because it has one unpaired electron ना. ठीक है, चलिए. Now let us move on to He2. Total number of electrons is 4, and if I talk about the molecular electronic, oops, my bad, electronic configuration, then in this case, so the first orbital will be which one? Tell me guys, पहला orbital कौन सा हो जाएगा? Sigma 1f. sigma 2. 1s. इसमें we will put 2 electrons, and after that Sigma 1s. हाँ बोलिए. sigma Sigma 1s. 1s 2 हाँ, antibody. we say sigma star 1s. How do we say it? Sigma star 1s. sigma star 1s2. Got it? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Now what should we do next? Number of bonding, right? Yes, How sir. much number of bonding? Number of bonding 0. 0. Number of bonding is 0. What is this? BMO or ABMO? ये भी कर लेते हैं. ठीक है, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम. बस थोड़ा देखने का अंदर ना, बहुत ज्यादा चीजें देखनी पड़ जा रही है ना. ओ माय गॉड, क्या क्या देखिए, क्या क्या याद रहे. अल्लाह अकबर, है ना, बहुत ज्यादा चीज हो जा रहा है. ठीक है, सिग्मा 1s, BMO, ABMO. टेल मी. Sigma 1s. This will be bonding or anti-bonding? Bonding. Very good. तो क्या करेंगे? BMO. Sigma star 1s. This is ABMO or BMO. Mariam, Siddiqa, Sara, all of you, please turn your mic on. Answer करने का है ना, mic off नहीं करना. ABMO ना. ABM. It is ABMO. So number of bonding is equal to how much? Number of electrons in bonding molecular orbital. 2. देखिए, आंसर आ गया ना. अभी दिक्कत नहीं हुई, right? Yes or no? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो इस वजह से ना whatever you know ना, try to just give it on paper. आपको जब चीजें दिखेंगी ना ऐसे, तब ज्यादा अच्छे से आंसर आएगा. अब देखिए हम पूछेंगे, number of anti bonding is equal to 2.
2। देखिए फट से आंसर आ रहा है ना। ओके नाउ देखिए बॉन्ड ऑर्डर बहुत लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया होगा। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, 2. बॉन्ड ऑर्डर इज 2 नहीं, 1 No, by okay. 2 divided by 2 minus 2 ना, this will be equal to 0 right? 0, yeah. ठीक है, no problem ना। Yes. ठीक है, so Yes, sir. obviously if bond order is 0 then He2 does not exist। अब जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या पैरा और क्या डाया, समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अच्छा अब देखिए इसी तरह से क्या हम सिमिलर चीज कह सकते हैं। आई कैन से सिमिलर थिंग अबाउट द एटम विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर आपको थोड़ा ध्यान हो, सिग्मा 1s अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते तो सिग्मा 1s का 2, देन यू हैव सिग्मा स्टार 1s 2। ये वाले और ये वाले एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, ये तो हो रहा है ना बॉन्ड ऑर्डर में। हाँ जी बोले Yes, sir. मरियम सारा, Yes, राइट। yes, sir. अब अगला क्या आएगा, यू विल हैव सिग्मा 2s if you have 2 electron here and sigma 2s star if you have 2 electron here. So see these two are cancelling each other and there is no bond. And similarly the sigma 2s2 and sigma star 2s2 they will cancel each other and there will be no bond order, correct hai? Yes. Yeah. So when you have total number of electron is 8, total number of electron कितने हो जाए? 8 तो टोटल का हाफ कितना हो गया? 4। So 4 is which element? The element is beryllium, if you remember. Yes, sir. है ना, ठीक है। Yes. Beryllium will be having a similar case, na? So we'll write similar will be case of Be2 with sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2 and sigma star 2s2 configuration। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? No, No. sir. ठीक है, अच्छा अब इस तरह से आपके पास थोड़ा, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं ना। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, बेरिलियम भी हो ही गया, राइट। एंड वी हैव आल्सो सीन H2 पॉजिटिव। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ के चलते हैं कार्बन के पास, ठीक है। वी आर नॉट डिस्कसिंग लिथियम बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम को डिस्कस तो कर लिया हमने, लिथियम एंड बोरॉन, ठीक है। तो आपको होमवर्क रहेगा MOT of lithium 2 and boron 2, ठीक है। ओके ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़े हम लोग अब, ठीक है। तो इनको आप लोग कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे हम उससे कहाँ तक बात कर रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग टिल द सिग्मा 2s स्टार, है ना, बेरिलियम और फिर बोरॉन के बारे में भी। अब आ जाते हैं हम लोग, अच्छा बोरॉन को डिस्कस कर देना पड़ेगा मुझे लगता है। लिथियम के बारे में आप लोग कर लीजिए, बोरॉन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जरा चलिए, मोटिव ऑफ लिथियम, तो एक ही बस आपके पास बचा है ना, राइट। नेक्स्ट व्हाट विल बी दिस 2 3 बोरॉन 2 मॉलिक्यूल। चलिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8. 8। अरे बोरॉन एटॉमिक नंबर क्या होता है बोरॉन का? 5. 5 ना, 10. 2 बोरॉन, हाँ 10 हो जाएगा, वेरी गुड 10। चलिए अब उस पर क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो द केस विल बी व्हाट, लेस देन 14 और मोर देन 14? Less. Less than 14. लेस देन 14 ना, तो केस कौन सा हो जाएगा, 1 या 2? 2. 2। सो विल स्टार्ट विद सिग्मा 2 का मतलब केस 2 आ गया आपके पास, राइट। सो इट विल बी इवन ना, इवन या ऑड? इवन है ना। Yes, sir. देखिए
तो केस में भी हमने ना उसी तरह से लिखा है आपको कि केस 1 में आप 1 2 2 1 कर रहे हैं, केस 2 में 2 1 2 1 कर रहे हैं, ठीक है ना। इवन विथ 14 एंड 15 वो तो याद ही रखिएगा, केस 2 में 2 1 2 1 करना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इन केस 2 विल बी डूइंग 2 1 2 1। सो विल स्टार्ट विथ सिग्मा 1s, you have to fill 10 electrons, है ना। उसके बाद सिग्मा स्टार ऑफ 1s, my bad, sigma star 1s2, then we will have sigma 2s2, then we will have sigma star 2s2. Now what will come? क्या आएगा इसके बाद? हाँ जी, pi, भूल गए। pi pi, pi 2px, which is equal to, ये साथ में आते हैं ना, pi 2py, ठीक है। अब सुनिए जरा यहाँ पे, when they are having equal energies, तो obviously वो कुछ इस तरह से ऑर्बिटल हो गया उनका, जैसे p के तीनों के सेम होते हैं ना, तो p के हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, तीन ऑर्बिटल के सेम। अब इनका दोनों का सेम है, तो विल दे आर लाइक दिस, करेक्ट है, हाँ या ना। yes yes sir, अब we have to fill how many? See, 2 2 2 2, 8 electrons are filled, we have to fill 2 more, so the 2 more electrons will go like this, right? yeah है ना। yeah, So you will be having 2p pi 2px1 and pi 2py1, got this? yes चलिए अब yes BMO sir, ABMO कर ले, BMO और ABMO, okay ठीक है। पहले वाला सिग्मा 1s, बोलो भाई सिग्मा 1s क्या होगा, BMO और ABMO? BMO BMO है ना। अभी हम नंबर ऑफ बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं सीधा, ठीक है ना, इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ बॉन्डिंग सीधा कर लेंगे, तब तक आप लोग की आंख ट्रेन हो जाएगी ना, यू विल बी ट्रेन बाय देन। सो नेक्स्ट वन इज ABM ABMO, after that BMO BMO, BMO, after that ABM ABMO, and then BMO, BM BMO ना, बोथ में पाई पाई है, ठीक। नाउ नंबर ऑफ बॉन्डिंग, काउंट करें, BBB 3, वाले काउंट कर लें, हैं कितने, how much, how many, not much, how many electrons, भूल गए, 3, नहीं काउंट कर पा रहे, 16, 16 क्या बोल रहे हैं, अरे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से तो कम से कम बोले ना। 3, हाँ जी, 3 6 6, 3 बोल रहे, 3 क्यों बोल रहे हैं आप सारा, ऑर्बिटल तो इन्हें काउंट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 + 2 4 5 and I 6, forgot. 6 है ना, ठीक है, भूल गए इतनी जल्दी। नंबर ऑफ बॉन्डिंग विल बी इक्वल टू 6 एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इट इज इक्वल टू 4 एक सेकंड जरा रुकिए, ये मैथ्स वाली चीज क्या है, हमने देखा नहीं कभी। Write your equation in ink. One, one, solve for x. Oh, ग्राफ वगैरह है यहाँ पे, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कर सकते हैं, I can't do anything here. एक सेकंड थोड़ा रुकिए जरा, I have never seen. Write your equation in ink or type. Select your equation. Tap on the math button. देखें जरा हम लोग थोड़ा सा इधर हट जा रहे हैं। Let us suppose I want a graph of y is equal to 4x square, ठीक है। देखते हैं ग्राफ बना पाता है या नहीं। ये किया हमने सेलेक्ट, और ये क्या मैथ, सेलेक्ट एन एक्स, ओ ग्राफ इन 2D, वाह यार, दिस इज नाइस, इंसर्ट ऑन पेज, ओ माय गॉड दिस इज आल्सो नाइस, आई नेवर सॉ दिस। मैथ वाले टीचर यूज करते हैं क्या ये? अच्छा आप लोग तो मैथ नहीं पढ़ते ना शायद, हाँ, no बायो वाले टीचर यूज करते हैं, no हम यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, हाँ आप लोग का चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर तो आ नहीं रहा है, थर्मोडायनेमिक्स में यूज करेंगे, चलो थर्मोडायनेमिक्स यूज कर सकते हैं, ग्राफ्स
वहां पे बट इक्वेशन से जरा कराने का सिस्टम पूरा है। वापस आते इधर सही। अगला क्या आ जाएगा? आफ्टर वी हैव काउंटेड द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, व्हाट वी डू Bond नेक्स्ट? order. Bond अरे order is हाँ, one. वेरी। अरे भाई साहब देखिए कैलकुलेट करके बैठ गए ना बच्चे। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 into 6 minus 4. This will be equal to 1. 6 minus 2 is equal to 2 and 2 will cancel out. So bond order is equal to 1. So exist करेगा नहीं करेगा? Yeah. It will exist. B2 exists. अच्छा अब ये बताइए पैरा है या डाया? Dia. पैरा ना, because it has unpaired electron. Paramagnetic. बात समझ में आ रही सबको? हाँ या ना? Wait, how बोलिए do भाई। you know? How did you know it was para? How do you know it is para? You can also know it as para. Oh, okay. Okay, so everything is there in notes. This is a habit that I have got from my teacher from 11th and 12th. When I used to, not me, like anyone used to go and ask him any doubt, okay, any doubt. He used to just say like this, open your notes, go to this topic and then read this third point or read this fourth point. And everything was there in the notes. I mean, we were not able to, what I can say, we were not able to extract or do justice to his notes actually. Okay. Achha. Chalo. So this is paramagnetic. After that, after boron, we will go about to carbon, right? Carbon पे चलते हैं अब. Oh, not pink. Like that. Blue. Fourth only ना? ये fourth है? हाँ. चलिए. C2 molecule. Carbon 2 molecule. Carbon 2 molecule. Okay. So again, start बताइए. सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? Electrons. Number of electrons. जोर से बोलिए सारा. जोर से बोलिए. Number of electrons. Very good. Total number of electrons. Total number of electrons. Yes. How much for carbon? 12. 12. 12. Very good. And so case 1 or case 2? Case 2. Case 2. Case 2. So 2, 2, 2, 1, 2, 1, right? Yes. 2, 1, 2, 1. ठीक है ना? इसको भी लिख लिया हम लोगों ने ताकि ऊपर जाना ना पड़ेगा. ठीक है? 2, 1, 2, 1 से स्टार्ट करना. So now molecular orbital electronic configuration. Start करें please. Sigma 1. Sigma. S. Sigma 1s 2. 2. उसके बाद Sigma 1. Sigma star 1s2. Sigma star 1s2. Then Sigma 2s2. 2s2. After that Sigma star 2s2. Sigma star 2s2. बाकी कोई नहीं बोलेगा? सारा सिद्दीका. Yes, sir. हाँ अब आगे क्या आएगा बताइए. Pi अब आ जाएगा. 2px. हाँ. Pi 2px. Very good. Pi 2px. The second pi 2px Pi 2p. is equal to pi Pi 2p. 2py. Then I will make the orbitals इस तरह से. Yes. And then we will plug in the 4 electrons there, right? So 1, 2, 3, 4, right? Here we had done 6, 8, sorry, 8, and then 4 was remaining. So I have plugged in the 4 electrons. No doubt, na? No. एक सेकंड, ये क्या हो गया? Okay, चलिए. Now, so this will be pi 2px2 and pi 2py2. BMO ABMO कर ले. Yes. So this will be B. Then BMO, ABMO, BMO, ABMO, and BMO. BMO. So number of bonding molecular orbital is equal to 6. 6. So no, 8. 8. 8. And number of anti-bonding it is equal to 4. 4. 4. ठीक है. Bond order is equal to
है ना, NB minus NA divided by 2 ही होता है ना, right? So it will be equal to how much? 2. 2. अच्छा, so C2 exists, yes or no? Yes, sir. C2 exists. Second point, para or dia? Dia. Dia ना, all are paired, see? Yes. Diamagnetic. अच्छा, अगर आप यहाँ पे नोट करें ना, सी एक चीज आपको बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, डोंट राइट, लीव योर पेन साइड. सी दिस सिग्मा 1s विल बी कैंसल्ड बाय सिग्मा 1s स्टार, दो Yes. इलेक्ट्रॉन इनके, तो दिस सिग्मा 2s विल बी कैंसल्ड बाय सिग्मा स्टार 2s, करेक्ट? व्हाटएवर Yes. बॉन्डिंग इट इज ब्रिंगिंग, एंटी बॉन्डिंग कैंसिल कर देगा. But we have these two molecular orbitals, which are the bonding molecular orbitals, and no one is there to cut it, right? No one is there to cancel it. So whatever bond we have is because of these two, correct? Yes or no? Yes. Yes, sir. Essentially speaking, that means C2 molecule has what type of bond? Sigma or pi? Pi. Pi. And do we have any sigma or we have only pi? Only pi. Only pi. This is something different than the valence bond theory. If you remember, in valence bond theory, if we had two bonds, then one of them will be sigma and the other will be pi. You remember that, all of you? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Tara. But in this case, what is happening? Both, like, the two bonds that we have, both of them are pi. Both in the case of C2 as well as B2, if you see. In C2, we have two bonds, both of them are pi. In B2, if you see, we have one bond, and that is, one bond is pi bond. Correct? Yes, sir. Sanji. Okay, so you will just write a note here. That according to MOT, both bonds in C2 and the bond of B2 are pi bonds. Okay, that is why existence of pi bond is not dependent on sigma in molecular orbital theory. ठीक है? All of you understood this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Sure. Now let us look at the case of N2. N2 का केस देख लेते हैं. C2 के बाद आ जाएगा fifth point N2. Sorry, what is the first thing that I will ask? N2 molecule. What is the first thing that we are going to write? Total number of electrons. Total. अब हम सारी चीजें छोटा छोटा करते हैं. Number total electron is equal to how much? 14. 14. 14. Yeah. So case 1 or case 2? Case 2. Case 2. Case 2. So we are going to do 2 1 2 1. Okay. So the configuration will be Sigma 1s 2. Sigma star 2. Sigma 2s2. Okay. Sigma star 2s2. Okay. Pi. Pi square 2px. Pi square नहीं करेंगे, pi 2px करेंगे, is equal to pi 2py करेंगे. ठीक है? उसके बाद we are going to put the, उसके बाद we are going to count the number of electrons remaining. So we have 8 electrons filled. How much is remaining? 6 is remaining. 7th electron, 8th electron, 9th electron and 10th electron. This will be 2 and 2 obviously. हम समझ रहे हैं, आपने कार्बन को देख के 2 2 कर दिया कि अब आपको सीधा सिग्मा 2pz में चेंज करना होगा, कि सिग्मा 2pz 2 आ जाएगा, है ना? राइट मरियम? Can you repeat? I'm saying you just saw the carbon, and carbon, after carbon you will just add one orbital and then that will be having 2 electrons. Yeah. Right? सही है. Yeah. But
just telling you, because देखिए जब एग्जाम में N2 आ जाएगा तो कार्बन तो ऊपर लिखा नहीं होगा, right? Yes. है ना? So we are going to treat that N2 is there, just N2 is there, है ना? We are not going to look at C2. Okay, Maria? Okay. Okay, fine. So next, what do we do? What do we do? Bonding and anti-bonding. हाँ, bonding है. So चल start हो जाए, चलिए. BMO, BMO, ABMO, ABMO, BMO, हम्म, ABMO, BMO, BMO. BMO, very good. So number of bonding here, it is equal to how much? 10. 10. And number of anti-bonding? देखिए गिनने की जरूरत नहीं है, आप 14 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देना. नहीं 4 होंगे. देखिए Okay, yeah. देखिए है ना, इलेक्ट्रॉन्स थी तो 10 है, सॉरी 14 है, तो 10 सब्ट्रैक्ट कीजिए, यू विल गेट 4, राइट? नाउ बॉन्ड ऑर्डर 10 minus 4 is equal to 6. 6 by 2 it is equal to 3. करेक्ट? Yes. तो ऐसे ही नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं. अब नाइट्रोजन में आइए कि आपके पास सिग्मा है और 2 पाई है. ठीक है, नाइट्रोजन में उस तरह से है, कार्बन में नहीं था वैसा. सो N2 will exist, yes or no? Yes, sir. N2 exists. डाया और पैरा, डाया और पैरा. Para. पैरा कहाँ से रे भाई, कहाँ से पैरा? सारे तो पेड है, कौन है अनपेड? Oh. व्हाट इज अनपेड हियर? दोनों पैरा है ना, पैरेट की तरह एक दूसरे का सुन के पैरा कर देंगे. डाया मैग्नेटिक, पेयर्ड देखना, पेयर्ड. ओके, ध्यान रहेगा. Yes. चलिए अब पढ़ते हैं आगे. इनटू के बाद लिख लिया आप लोगों ने? बोथ ऑफ यू रोट दिस डाउन? Yes, sir. चलिए, आज की जिसने क्लास मिस कर दी, कितनी अच्छी क्लास चल रही है ना मरियम एंड सारा? Yes. है ना, अफसोस. आपका तो अच्छा, आपने तो क्लास कर ली. चलिए अब हम लोग देखते हैं O2 के बारे में, है ना. व्हाट इज नेक्स्ट? O2. O2 इज 6th, है ना. 6th इज O2. O2 मॉलिक्यूल स्कूल में कराया है ये सब या फिर स्टार्ट नहीं हुआ चैप्टर अभी? We didn't start yet. It's not started. Sara, what about you? It was there in online classes that I was. अच्छा, आपके तो ऑनलाइन चल रहा है ना. ये ऑनलाइन का बिजनेस बड़ा खराब है, खासतौर से इस टाइम पे, है ना. कोरोना ने आके गलत कर दिया. मतलब कुछ तो अच्छा हुआ, जैसे हम पढ़ा पा रहे हैं आप लोग को, है ना, लेकिन स्कूल वाले गलती कर दी है, स्कूल में नहीं होना चाहिए था. चलिए O2 मॉलिक्यूल्स. O2 मॉलिक्यूल, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16. 16. वेरी गुड, 16. केस 1, केस 2? Case 1. हाँ, केस 1 आ गया. अब तो N2 काम नहीं आने वाला मरियम, है ना. ठीक है, केस 1. केस 1 में क्या होगा? 1 2 2 1 1 2 2 1. 2 1. चलिए, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाइए. सिग्मा 2s तक डरने की जरूरत नहीं है आप लोग को. सिग्मा 2s तक आराम से बोलिए. सिग्मा 1s 2, then Sigma star 1s2, 2. and then Sigma 2s2. Sigma 2s2. very good. Sigma star 2s2. Okay, now अब बताइए क्या आएगा, पाई या सिग्मा? Sigma. Sigma. सिग्मा. कौन सिग्मा? सिग्मा 2pz. Sigma 2pz. हाँ, सिग्मा 2pz 2. ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? Pi. 2px वेरी गुड. is equal to Pi pi 2pz. 2py. 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 ठीक है, अब आ जाइए इधर, बॉन्ड आ जाएंगे आपके पास. तो हम नहीं इलेक्ट्रॉन सर रिमेनिंग इधर हो गया आपके पास में 6 8 10 10 हो गया ना. Yeah. Yes. 10. How much is remaining? 6 is remaining. So you can do 1 2 3 4. Now after this again 2 is there, na? So pi के star आ जाएंगे, right? Yes, sir. Pi star 2px equal to pi star Pi 2py. Mariam. Yes. No, I mean correct, no? No problem, right? Yeah. Okay, so again when you have equal, then you will be making this type of orbital. And then how much remaining electron? 2 remaining, na? So you 2, have 1 yeah. electron here.
the another electron will be here. Next ABMO BMO कर लेते हैं. Okay, चलिए start हो जाइए. BMO, BMO, ABMO, ABMO, BMO, BMO, ABMO, ABMO, BMO, 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 and then ABMO. BMO, ABMO. Very good. So number of bonding it is equal to how much? 1 2 8. 3 4 8. हाँ, very good, 8. And number of anti bonding कितना हो जाएगा? 8 6. 16 ना 16. Oh, ये देखना 16. ठीक है, yes. 16 minus 8. और बॉन्ड ऑर्डर, एक सेकंड, नहीं 0. 1 2 3 नहीं, बॉन्ड 0 तो नहीं होना चाहिए. 1 2 3 4. I think NB is 10, right? NB is 10. 1 Should be 2. हाँ 10 होगा, 10 होगा. सॉरी, यहाँ पे बी भी 2 बार आएगा ना, माय बैड. ये बी भी 2 बार आ जाएंगे. ठीक है, दैट इज व्हाई देयर वाज कंफ्यूजन. दिस इज आल्सो एन ऑर्बिटल, दिस इज आल्सो एन ऑर्बिटल, राइट? सो बी भी 2 बार आ गए तो फिर हम 5 कर सकते हैं. ठीक है, so 1 2 3 4 5. Yeah. So number of bonding is 10, my bad. 10. So Then anti 6. bonding will be 6. Yeah, 6. So the bond order will be 2. 2. So O2 exists, yes or no? Yes. O2 exists. अब बताइए पैरा या डाया? Dia. अरे यार देख लो एक बार, अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? डू वी हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन? Yes, sir. ये भी कर लेते हैं ना एक स्टेप. देखिए स्टेप स्किप करने से ना गलतियां बढ़ जाती हैं. तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो? Yes, sir. यस. तो देयरफॉर पैरामैग्नेटिक. therefore it is paramagnetic. मरियम को दिखा? Yes. दिस इज द पैरामैग्नेटिक. ठीक है, यहाँ पे ऐसे. ठीक है. अब O2 का जो केस है ना, वो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि उसमें सवाल थोड़े ज्यादा है. इफ यू गो टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और उसके आखिर में जाके बिल्कुल अगर आप सवालों को देखें, एट द एंड व्हेन दे टॉक अबाउट एमओटी, सो दे आस्क यू they ask you to calculate the bond order for N2, O2 positive, O2 negative. Then they also ask you to compare the stability and magnetic property of O2, O2 positive, O2 negative, and O2 2 negative. ठीक है. So we are going to take all of these cases. तो सबसे पहले अगर आ जाए आप, आपको O2 के बारे में तो पता चल गया है ना? सही है. Yes. Yes. O2 के बारे में तो आपको पता चल गया. अब हम लोग चलते हैं O2 पॉजिटिव. कहाँ चलते हैं? O2 Positive. पॉजिटिव. ठीक है. O2 पॉजिटिव में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ से देखिए, आई होप यू कैन सी माई पेन. यहाँ पे मेरा पेन है, ठीक है ना? और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया. सही है जी, कोई दिक्कत? ऐसे ही तो Yes. होगा. बाकी एवरीथिंग विल बी सेम ना, एवरीथिंग विल बी सेम. बाकी सब सेम, बस लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा. नाउ टेल मी, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, क्या हो रहा, नहीं हो रहा? नहीं आ रहा समझ में? हाँ जी, नहीं आ रहा. थोड़ा डिटेल जाना पड़ेगा क्या? बोले. Yes, sir. थोड़ा डिटेल जाना पड़ेगा. चलिए ठीक, चलते हैं थोड़ा डिटेल में. एक बार और कोशिश करते हैं. ठीक है, लेट अस ट्राई वंस मोर. When we have total number of electrons, that is 15. Total number of electrons कितने हो जाएंगे? 15. मरियम एंड सारा, Yes, sir. Yes. right? In O2 positive, we are dealing the case of what? O2 positive. O2 and we have positive, right? So again, everything will be same. Sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, right? Sigma star 2s2, correct? After that, we'll have sigma 2pz 2. Then you will have the pi 2px2 and the pi 2py2, correct? Then you will Yes. have the pi star 2px equal to pi star
2py, but pi star 2px will have 1 electron because देखिए 2 4 6 8 10 और 4 14 and then 150, करेक्ट है? Yes, sir. आया ना? अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग तो सेम है। देखिए बॉन्डिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बॉन्डिंग तो सारे के सारे वैसी के वैसी। एंटी बॉन्डिंग से Yeah. इलेक्ट्रॉन निकला है तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इज स्टिल 10, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए हैं? 5। आया ना? Yes, sir. सही है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 5। बताइए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? 10 minus 5 is equal to I 5, 5 by 2 is equal to 5 by 2 is equal to 2.5. 2.5, bond order is 2.5। दिख रहा है आपको कुछ? हाँ या ना? Yes. Yes, sir. ठीक है, चलिए अब देखिए आप लोगों को हम एक चीजें बताते हैं कुछ, ठीक है? अब मान लीजिए, अच्छा इसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन, इसके बाद अगर कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल बचा है, दैट इज सिग्मा स्टार 2pz, सही? सिग्मा स्टार 2pz, सही है हाँ या ना? Yes. 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 ठीक है, चलिए अब ना आई एम गोइंग टू मेक अ पर्टिकुलर चार्ट, वो थोड़ा सा ध्यान से आपको रखो, ओके? बस ध्यान क्या रखना है आपने, आपने ध्यान रखना है इस चीज के बारे में, दैट O2 का जो आपके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, इफ आई टॉक अबाउट दिस पार्ट, देन अंदर के तो सारे कैंसिल कर दिया था ना, इस वजह से हम सिग्मा 2s स्टार, सॉरी सिग्मा स्टार 2s2 को नहीं देख रहे हैं। आई एम काउंटिंग आफ्टर दैट बिकॉज आई होप यू सी हियर that 1 is getting cancelled, 1 is by 1 star, 2 is getting cancelled by 2s star. So whatever bonding, anti-bonding is happening, it will be happening here only. Correct? Yes or no? ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा देख के चलते हैं। This is for O2. O2 के लिए क्या होगा? Pure O2. O2 में कोई चार्ज वार्ज नहीं है। O2 के लिए आपके पास this is the outermost electronic configuration of the molecule O2, and यहाँ पे आपके पास 2px में 1 और 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट? 2pz में अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सही है हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं No. ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? ठीक है, चलिए अभी हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी बना लेते हैं, आपको कुछ सारी चीजें साफ साफ बिल्कुल दिखाई। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक ना? वी हैव O2 हियर। क्या क्या चीजें के बारे में हम बात करने वाले हैं, जरा उसको भी हम लिख देते हैं। आपको पता है MB क्या होता है? व्हाट इज MB? MB पता है क्या होता है? MB पता है आपको? मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या MB? मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद आई विल टॉक अबाउट नंबर ऑफ बॉन्डिंग, आई विल टॉक अबाउट नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद आई विल टॉक अबाउट व्हाट, आई विल टॉक अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग और बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, फिर बॉन्ड लेंथ आ जाएगा, ठीक है, फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ आ जाएगा, उसके बाद बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, और उसके बाद एग्जिस्टेंस की भी बात कर लेंगे हम लोग आखिर में, ठीक है ना? एग्जिस्टेंस, सही है? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? No. No, sir. चलिए अब थोड़ा सा इसको ऊपर करके ताकि स्क्रीन में सारी चीजें आ जाए, फोटो वाली, चलिए ये सब तो नीचे रखते हैं, ठीक है। अब कहाँ से स्टार्ट करें बात स्टार्ट करते हैं हम लोग O2 के 2 नेगेटिव से। कहाँ से बात स्टार्ट करते हैं? O2 2 नेगेटिव। O2 है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए हमने? 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए बताइए? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा उसके बाद आते हैं हम लोग अगले में, O2 में हम डालते हैं 2 माइनस हो जाएगा ना, 2 माइनस। O2 में हम लोग डालते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन डालते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, तो O2 नेगेटिव हो जाएगा, सही। अब Yes. हम O2 में कुछ नहीं डालेंगे तो O2 में हो जाएगा O2, ठीक है। अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू ऐड, नॉट ऐड, अब तो ऐड तो कर दिया, रिमूव करना है ना। O2 में पॉजिटिव कर देते हैं, सही। कोई दिक्कत No. No, sir. नहीं? O2 में 2 पॉजिटिव कर देते हैं, O2 में दोनों इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, O2, सही। O2 2 पॉजिटिव, ठीक। कोई दिक्कत No. No, sir. नहीं? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा धैर्य रखिएगा बस, है ना, साथ दीजिएगा हमारा, ठीक है ना। घबराना नहीं है आपने, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। कौन बोलता है ये बात? हैव यू हर्ड दिस डायलॉग?
आपने घबराना नहीं है। नहीं Mm, मरियम, आपको भी नहीं पता? no. नहीं पता? आपके दुश्मन कौन है मरियम? हु इज योर बिगेस्ट एनिमी? No one. सॉरी, नो वन। हाँ, आप मरियम का तो कोई नहीं होगा, लेकिन मरियम नवाज का एक है दुश्मन। कौन है मरियम नवाज का दुश्मन? यू नो हु इज मरियम नवाज? No. No, sir. नहीं, मरियम नवाज ही नहीं पता? कुछ नहीं पता? लूलू मॉल के अलावा कुछ आता है आप लोगों को? मरियम एंड सारा, लूलू मॉल घूमने के अलावा कुछ आता है आप लोगों को? अरे मरियम नवाज इज द बिगेस्ट ऑपोजिशन अगेंस्ट इमरान खान ना, पाकिस्तान। Oh. अच्छा, ये भी नहीं पता? चलिए ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लूलू मॉल वालों की क्लास चल रही है यहाँ, देखिए इधर। O2 नेगेटिव, ठीक है, O2 2 नेगेटिव। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर वी एडिंग टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2. अब ये दो जाएंगे कहाँ? जाएंगे तो यही ना, सही है? Yeah. Yes. ठीक है, अच्छा ठीक है, जाएंगे यही। अब देखिए सब पेयर्ड हो गए, आए ना? Yes. Yeah. सब पेयर्ड हो गए, सब पेयर्ड हो गए तो क्या हो जाएगा? डाया या पैरा? Dia. डाया। डी लिख दिया हमने, कोई दिक्कत No. नहीं? Where did we add the electron? एंटी में या फिर बॉन्डिंग में? एंटी में या फिर बॉन्डिंग में? Anti. एंटी बॉन्डिंग या एंटी में? तो And बॉन्डिंग वाले कितने थे? बॉन्डिंग तो 10 थे, 10 रहेंगे, सही? Yeah. एंटी बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा? 2 बढ़ जाएंगे, सही? Yes, sir. पहले कितने थे एंटी बॉन्डिंग में? O2 में, प्योर O2, कुछ नहीं डाला हमने, ना इलेक्ट्रॉन निकाला ना डाला। 6. 6 में 2 बढ़ा दीजिए, कितने हो गए? 8। 8. समझ में आ रहा नहीं आ रहा मरियम सारा? Yes. Yes. ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 10 - 8 डिवाइड बाई 2। 10 1. - 8 कितना? 1. 1। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ के बारे में ये हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है? बॉन्ड लेंथ के बारे में क्या ऑर्डर क्या रहेगा उसके बारे में, ठीक है? बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एसोसिएशन, बॉन्ड एग्जिस्टेंस के बारे में बस हम लोग सही बोल सकते हैं, हाँ जी एग्जिस्टेंस तो है, सही है? Yes. Yeah. अब चलते हैं यहाँ पे O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव में we will be adding only 1 electron, right? Yes. डाया या पैरा? Dia. पैरा। नंबर ऑफ बॉन्डिंग स्टिल सेम 10, Okay. है ना? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग? नंबर ऑफ, अच्छा चलिए ठीक है, हम आप लोग के लिए थोड़ा सा मदद कर देते हैं, O2 का दिखा देते हैं आपको, है ना? O2 क्या था? O2 था पैरा, इसमें थे Yeah. सॉरी NB की जगह NB लिख दिया हमने, हम भी बेवकूफ हो गए यहाँ पे, ठीक है ना? लूडो वालों के साथ रह के मेरी भी लूडो, ठीक है 10 हो गया। अब इधर आ जाते हैं, ये था कितना? 6 हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर था यहाँ पे 2, ठीक है? चलिए 6 में हमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो 7 हो गए, करेक्ट है गाइस? Yeah. सुनो प्लीज टेल मी। Yeah. 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 और Yeah. बॉन्ड ऑर्डर विल बी 10 - 7 विल बी इक्वल टू 3, 3/2 विल बी इक्वल टू 1.5, एग्जिस्ट तो ये भी करेगा, करेक्ट? Yes. Yeah. O2 पॉजिटिव, ठीक है? तो O2 पॉजिटिव में क्या होगा बताइए? O2 पॉजिटिव में आपके पास O2 तो ये हो गया, O2 पॉजिटिव में यू विल रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, Yes. you Yes. remove 1 electron so it will be still para, सही है? Yeah. Yeah. ठीक है, बॉन्डिंग में कुछ नहीं किया हमने तो बॉन्डिंग में 10 का 10 रहेगा, सही है? हाँ जी, Yes. Yes, sir. अच्छा we have removed 1 electron from the anti bonding so it will be 5, 5. 5. 10 - 5 it is equal to 2.5. 5, very good, 2. O2 positive में आ जाते हैं, so O2 positive you will remove 1 more electron, if you remove 1 more electron so it will be now डाया, Dia. सब पेड हो गए, बॉन्डिंग में कुछ किया ही नहीं, एंटी बॉन्डिंग में हो जाएंगे 4। नाउ बॉन्ड ऑर्डर विल बी 4, समझ में आया? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड 4? यस और नो प्लीज Yes, टेल मी। sir. Yes. 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 अब बताइए क्या होगा उनका जो क्लास में नहीं है ना? 2 ही बच्चे आए हैं आज, है ना? बाकी बच्चे मर जाएंगे। ऐसी चीज है मोटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अब समझ में आ रहा है? कोई देख के घबरा नहीं जाएगा 10th क्लास का बच्चा? 10th क्लास में आप ऐसे बोल दो बस उनको, पाई कान में जाके पाई बॉन्ड, मुझे पाई केमिस्ट्री में भी आता है, क्या बोलेंगे वो? पाई केमिस्ट्री में भी आता है, ठीक है? सर पकड़ पाएंगे। लाइफ वाज वेरी सिंपल व्हेन वी हैड SPD, बट व्हाट? पावर रेंजर्स, है ना? जब तक SPD पावर रेंजर्स थे तब तक तो सही था, अब क्या हो गया? नाउ वी हैव SPD के साथ F हो गया, सो वी हैव 4, राइट? नाउ 4 के बाद कितना हो जाएगा? 10 - 4 इट इज इक्वल टू 6 एंड
3, वेरी गुड। तो ये एग्जिस्ट कर, अच्छा ये सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। Yes. अब आप लोग को बिल्कुल दिख रहा होगा बॉन्ड ऑर्डर तो जिसका ज्यादा, 3 का ज्यादा, फिर 2.5, फिर 2, फिर 1.5। अब बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम बात करें O2 नेगेटिव, तो इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, है ना। इनवर्स तो साइन चेंज, O2 2 नेगेटिव का उससे कम, फिर O2 एंड देन O2 पॉजिटिव एंड देन O2 2 पॉजिटिव। ये समझ में आया नहीं आया बताएं। Yes, sir. ऑर्डर एंड लेंथ, है ना। अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। सो O2 नेगेटिव का सबसे कम, O2 नेगेटिव, सॉरी O2 दिस इज 2 नेगेटिव ना, माय बैड, 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, ठीक है। देन वी हैव oops my bad, O2, then we will have O2 positive, bond order किस था, and then we have at last O2 2 positive. Bond dissociation energy will be directly proportional to the bond strength. जितना ज्यादा bond strong उतनी ज्यादा energy लगेगी तोड़ने के लिए. So we will have O2 2 negative, then we'll have O2 negative, then we'll have O2, then we'll have O2 positive, then we'll have O2 2 positive. मतलब जो लोग नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई. Now your homework will be do a similar analysis of क्या क्या बताएं हम, N2 आप रख लीजिए इस तरह से, N2 पॉजिटिव कर लीजिए आप, फिर N2 कर लीजिएगा और उसके बाद N2 नेगेटिव कर लीजिएगा, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, सिमिलर एनालिसिस. So you please stay in the class, okay? Please stay in the class. आप लोग का टेस्ट होगा